perform, if you read books about in OB, they perform a lot of functions for you, okay? Attitudes, ये लिखे मार्क दे दे, ये हो रहा है रिकॉर्ड दे दे, दे adjustment function करते हैं, they act as filters, they organize facts, ईगो डिफेंसिव फंक्शन है उनका, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन है, नॉलेज फंक्शन है, दे रिकंसाइल कॉन्ट्राडिक्शन, एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी, एटीट्यूड ऑफ इन्फीरियरिटी, जिसको हम आज होपफुली डिस्कस करेंगे, इन ग्रुप आउट एटीट्यूड, अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स is about attitude. If I ask you what is loyalty to another Pakistani, it is nothing but an in-group attitude. What is prejudice? Prejudice against Indians. It's nothing but an out-group attitude. हम job satisfaction भी discuss करेंगे. What is job satisfaction? It's an attitude made of these components, right? But so the most important function है, अगर आपने इसकी पिक्चर लेनी है तो शायद मैं ये मिटा दूँ. Prejudices, biases, assumptions, values, beliefs, basic assumptions, ये एक और चीज़ है जिस पे आपने स्ट्रैटेजी में आप पढ़ेंगे, कल्चर में आप पढ़ेंगे. देखें, attitudes, more than anything for me, their first function is they act as a frame. Look there. It's a frame. It's a frame of reference. Okay. It's a frame of reference through which you view the world. It's a mental model. It's a predisposition. It's a persistent tendency. ये देखें. It's a background against which you view facts or objects or phenomenon. It is a basic assumption. ये flag करना मुझे अगर time मिला तो मैं आपको बताऊंगा. ठीक, basic assumptions against which. So it's a framework. Okay. हसन साहब, याद है हमने जब टोल में पढ़ा था, मैंने कहा था कि रैट सारा फिरा है. रैट ने एक कॉग्निटिव मैप बनाया है पूरे मेज का, याद है? ठीक. सो ये जो फ्रेमिंग अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है पूरा. ठीक है. मार्केटिंग में भी अपना इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है. ठीक. अगर हमें सेशन मिला तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेमिंग होती कैसे. लॉ में फ्रेमिंग होती है. ठीक. सो एक ही केस है लेकिन डिफरेंट तरीके से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम को फ्रेम करना बहुत क्रिटिकल है. मैनी डिसीजंस आर, व्हाट इज अ प्रॉब्लम, वी डोंट नो. ओके. एनीहाउ, अभी के लिए इतना समझ लें कि ये सारी जो मैंने बातें की हैं, इट्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is from a perspective of cognitive mapping, it's a very simplified representation of the environmental complexity. This frame of reference, this frame is a simplified, or what is this frame made of? Your beliefs and excellent, your beliefs and more importantly affect your feelings. This is the frame made of.
ना इसके बहुत से फायदे हैं, देखिए जैसे मैंने कहा पहले ही, इट हेल्प्स अस मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी. So this, you see the world through a frame and you don't have to see everything. Okay? इसके अलावा it gives us a sense of stability and identity. I mean, who am I and who are you? To a large degree, you are and I am a sum of our whole beliefs and a sum of our feelings and emotions. Nahin? It also gives us a sense of confidence when we encounter a problem. Okay? So you're a manager. A person comes and says, "Sir, break चाहिए," सही है? So you have a frame, okay? How to deal with feelings and your beliefs. अब कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेक की, जाओ काम पे, वापस अपने डेस्क पे. Now, अब it worked. Gives you confidence. घर गए, okay? So Mrs. says, in-laws पे जाना है, आप कहते हैं hopefully, अगर आप कहते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, again if you are successful, I don't know, so it's further reinforced. Say, so these are all the benefits, but is there a flip side? मैंने आपको एक रीडिंग भेजी है, रेकनिंग जो किताब है, डेविड हेल्बरस्टम. Because you are so, they're part of your identity. These are mental models. These are codes that you download when they're, so you don't register signals coming from market, okay, for industry, basic assumption की तरह, that would disturb this mental set. This is another form of dissonance. ठीक? So you don't register the signals are not registered. Let's say I remember a time जहाँ जब नए सेल फोन आए थे तो I mean Nokia was synonymous with cell phones. Like everybody said Nokia तो क्या किया, मतलब Nokia was everywhere, and they were so confident about their model that they failed to register that things are changing. आप strategy पढ़ रहे हैं ना, टच फोन now and Nokia की नज़र आता है. ये औरत मार्च ने क्या किया है, एक सिग्नल दिया जिसने आपके फ्रेम को, मेंटल सेट को, जो कि फीलिंग्स और बिलीव्स है, बिलीव अबाउट फैमिली, बिलीव अबाउट हाउ अ वुमन शुड बिहेव, फीलिंग्स टुवर्ड्स द रोल ऑफ वुमेन, उस मेंटल सेट को डिस्टर्ब किया है या नहीं किया? आई मीन आई एम नॉट सेइंग फॉर मी इट्स, आई एम इनडिफरेंट, भाई करना है करो, बट उस आप नोटिस करें कि उसका अफेक्ट हो रहा है. सो ये एक डिसोनेंस है. ये एक डिसोनेंस थी कि प्रीमेसी वाली, कि आपने फर्स्ट इंप्रेशन बनाया और उसके बाद आप वो इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट नहीं कर रहे जो डिसोनेंस क्रिएट करे. अब वही यू वांट कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी. ये एक और एटीट्यूड में जो डिसोनेंस है, वो डिसोनेंस तब आती है कि जब आपका एटीट्यूड और बिहेवियर का मिसमैच हो. जब दो एटीट्यूड्स हों आपस में, यू वांट फीमेल इमेंसिपेशन बट आप डिस्टर्ब हो रहे हैं औरत माद से, दिस इज डिसोनेंस. ठीक? लियोन फेस्टिंगर इस कॉन्सेप्ट का इन्वेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एरिया ऑफ मैनेजमेंट में. अब इसमें हमेशा जस्टिफिकेशन होती है. ठीक? बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस जो रिकॉर्ड की गई फेस्टिंगर इज पीपल हु वर्क फॉर these cigarette firms, Philip Morris. I mean, they believe that their emotions, if you like, we don't want to kill people. They are selling cigarettes. So what do they say? How do they manage their dissonance? Say we're giving people a lot of jobs. हम warnings सामने लिखते हैं, and it's a free world. Even if people want to buy it, what can we do? So this is how they manage the dissonance. Okay. Again, this fossil fuel वाले वो कहते हैं भाई we have to give cheap fuel, a lot of people are employed, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी. ठीक? ये जो केस था इसमें what happened? They had a mental model about how cars should be. सिग्नल्स आ रहे थे जापानीज सक्सेस के, बट उस डिसोनेंस को उन्होंने कैसे मैनेज किया? सोचे, पढ़ा?
उन्होंने पूरे फ्लोरिडा के लोगों के बारे में अजीब बातें करनी शुरू कर दी कि वो रिलायबल, हालांकि शुरू में लिखा है दे आर रिलायबल इंडिकेटर ऑफ ट्रेंड, उन्होंने कहा वो रिलायबल नहीं है, ठीक, प्रूवन भी अभी तक। चलिए let's run a little experiment, let's see how attitudes define meaning for you, this frame of reference, how does this framing work? Let's see if we can do it here or not. Two diamonds. Can you see the diamonds? Look like diamonds, hopefully. अच्छा, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं? दूसरा थोड़ा छोटा लगा, थोड़ा छोटा हो गया। जनाब ठीक है जी। कोई भी फैक्ट जब आपको प्रेजेंट किया जाता है, consider this diamond as a fact, as a object, as a phenomenon, as an औरत मार्च, ठीक? Do you see them like this? ये कैसा लग रहा है जी? डायमंड ही लग रहे हैं ना? Yes. But what happens? मैंने कहा their attitudes are like backgrounds, as a background against which you see phenomenon, objects, facts, and then you give opinions. Okay? Let's see. Maybe I'm successful. Has something changed? What has changed? Left वाला उसके पैरेलल लेफ्ट वाला क्या लग रहा है? डायमंड इतना लग रहा है या स्क्वायर लग रहा है? नहीं, वो सर वो स्केयर लग रहा है, रेक्टेंगल में स्केयर लग रहा है और वो डायमंड ही लग रहा है क्योंकि वो पैरेलल हो गया तो ये बताया। Yes. So whenever these are your attitudes. These are the external frames made of your emotions, your feelings, and your beliefs, and they influence the internal phenomenon. Right? Let's say about Jews now. Okay. People have certain beliefs. एक तो हमारी feelings भी हैं लेकिन कुछ beliefs हैं. एक तो वो they are very intelligent और they make a lot of money. ऊपर से they are stingy, वो पैसे खर्च नहीं करते. उसके अलावा वो clannish होते हैं, इकट्ठे रहते हैं. Like लंदन में हैंडन और कॉलनडेल, इन एरियाज में हम भी ऐसे ही हैं, वैसे एल्फर्ड वगैरह में हम भी इकट्ठे रहते हैं. अच्छा, अब मिस्टर मिलर एक ज्यू है और उनके साथ एक मिस्टर टिम है. सो लेट्स सी. Mohsen, can you read this? Attitude determine meaning.
Mr. Miller succeed in business, that proves that Jews and smart. Jews are smart. Jews are smart. If Mr. Tim succeed in business, it only proves that Mr. Tim is smart. If Mr. Miller fails in business, it is alleged that he nevertheless has money salted away somewhere. If Mr. Miller fails to give charity, that is because Jews are tight. If he gives Stingy, tight, conjuice. he is trying to buy his way into society. If Mr. Miller lives in a Jewish section of city, it proves Jews are so much clannish. If he moves to a non-Jew locality, that is because they are try to harm him. अच्छा पॉइंट क्या है इसमें? इसमें पॉइंट ये नहीं है कि इसमें पॉइंट आप नोटिस करें क्लोजली. Two contradicting facts reach the same conclusion. If I have an unfavorable attitude towards Jews, fact A and fact B. If he gives charity, if he does not give charity, aren't these contradictory facts? But because of this framing, which reach the conclusion that I don't like Jews, I don't want to hang around with them. Now there was this guy. I was once having a sitting with somebody in the same conversation. This guy had an unfavorable attitude towards female education. I said, why? Sir, देखे ना आपके, मैंने क्लास में देखा था 80% लड़कियां थी, मेडिकल कॉलेज में लड़कियां हैं, इंजीनियरिंग में अब लड़कियां आ रही हैं, ये सीट्स ले लेती हैं और फिर उसके बाद जॉब्स करती नहीं, तो फिर वो सारी सीट्स ज़ाया हो जाती हैं. ठीक, दिस वॉज उसका एटीट्यूड. ठीक, उसका बिलीव था या फीलिंग्स थी या कम्बिनेशन था दोनों के बारे में, दोनों का. मैंने कहा ठीक है, फिर गपशप होती रही, चाय पीते रहे. फिर मेरी दो स्टूडेंट, मैंने कहा यार ये दो स्टूडेंट्स थे ना, ये अभी रिसेंटली हायर हुए टेलीनॉर में, ये किसी कंपनी में ना. कहता है यही तो डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ, देखें ये पढ़ लेती हैं, फिर ये नौकरियाँ करती हैं, उससे हमारा फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो रहा है. देखें हम वेस्ट के रास्ते में जा रहे हैं. औरत अब नौकरी करेगी या घर चलाएगी? पहले वो कह रहा था ये सीट्स लेती हैं और नौकरियां नहीं करती, अब ये कह रहा है चूंकि ये नौकरियां करती हैं घर तबाह नहीं होता. टू कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स. बिकॉज कहाँ गया वो? स्टेबल, सेटल्ड, परसिस्टेंट. ठीक, चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है तरीके, बट हम उस तक होपफुली आज पहुंच जाएं. But you are with me. We know what we have defined attitudes. We know the elements of attitude. A fact, cognition leads to certain behaviors. Right? Most important, feelings. Because feelings are involved, there are evaluative aspects, right and wrong. Now there are frames. There are simplified frames to view the world, which are good. They help us navigate or manage the complexities. They give us a sense of identity. They give us confidence. But at the same time, too rigid an attitude fails us to register signals from the outside world that we need to change our beliefs or we need to revisit our feelings. But it's not easy because even contradictory facts can't change the opinion. Okay? मैं एक एक्सरसाइज करने लगा हूँ, ये लोगों के साथ भी. मिस्टर नासिर साहब हैं जी, can you do this one? Can you think like Mr. Nasir? Mr. Nasir believes that business gives job to people and people ought to apply. हम पैसे देते हैं भाई नौकरी को, तनख्वाह देते हैं, इनको इस चीज़ का शुक्रगुजार होना चाहिए और एक फुल डेज वर्क का फुल डे सैलरी उनको मिलती है. You can even close your eyes. Try to be like Mr. Nasir. Can you do? Would be difficult for you, Rabia, but can you be like Miss Nasira? Okay, can you think like him? I'm going to present some facts to you. What would be your opinion? What would be your actions? What actions would you recommend? Now that you are thinking like Mr. Nasir.
फ्रैंकली So LTOR, लेबर टर्नओवर labor रेट, turnover. इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेक्स्ट टाइम आना चाहिए, HRM पढ़ा आपको है ठीक यार। जैन 2019 to Jan 2020 yearly होता है, number of people left divided by average number of people in this period into 100, आपके पास एक नंबर आ जाता है। इट्स जस्ट अ नंबर, उस पर आपने अपना माइंड भी अप्लाई करना। हो सकता है एक ही पोजीशन पे लेट्स से 10% है, तो एक ही पोजीशन साल में 10 दफ़ा रिप्लेस हुई है ठीक है। सो और लोग लेट आ रहे हैं ठीक, लंबी लंबी ब्रेक्स ले रहे हैं। अब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोशिश की है, लेकिन क्या है मौजा लगी है, हैं? मौजें लगी हुई हैं तो पैसे हाँ, भी देते हैं, ना शुक्र है। शुक्र है। और यार ये जो लेट आ रहे हैं इनके लिए कोई रूल्स बनाओ ना ज़रा। भाई को खींचो टाइट करो हाँ, ये तो पेड रिड्यूस करो। 2 दिन ठीक। बाद जाएंगे नौकरी से तो समझ आ जाएगी। ठीक 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 ठीक, वेरी नाइस। अच्छा थोड़ी देर के लिए although you will try but let's try. I want you to think like this is Mr. Rashid. He's a environmental. He believes that business needs employees to get its jobs done, and that is his job to build a good team. Now take some time, think about it. Be in this frame of reference. Build this frame of reference. It's difficult, पहले आपको पिछली प्राइमिंग रब करनी पड़ेगी, but still try. राइट हो गए। अब इधर मेरी तरफ देखो, सिमिलर फैक्ट्स, टर्नओवर 30% पीपल आर लेट। अब आप क्या ओपिनियन है, अब आप क्या बिहेवियर, आपके एक्शंस होंगे? कौन यू कैन डू इट। Sir, being a Mr. Rashid, I think okay, 50% employees late आ रहे हैं कोई बात नहीं, but if they are working fine, I don't think कि वो late क्यों आ रहे हैं। As long as they are giving results. I'm I'm not interested in micromanagement. Good. And secondly, sir, 30% turnover है, so I need to look into it कि क्या matters there, why they are- Excellent. How would you do that? Are we conducting as exit interviews? और एग्जिट इंटरव्यूज हर बंदा नहीं कर सकता है स्पेशल ठीक, पीपल से वैसा, लेकिन ठीक। सो यू सी सेम फैक्ट्स, एक थ्योरी एक्स के बिलीव्स और फीलिंग्स हैं और एक थ्योरी वाई के बिलीव्स हैं। आप इट्स अप टू यू ठीक। सो अब हम करें क्या ठीक ब्रीफली, ये आपको नजर आ रहा है? ये एटीट्यूडनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इट्स FOR ठीक। ये फैक्ट्स के बारे में ओपिनियन देता है, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर बिलीव्स एंड फीलिंग्स व्हिच आर पार्ट ठीक। देखिए आप जस्टिफिकेशन जितनी भी देते हैं, ओपिनियंस चेंज नहीं होंगे, बिकॉज आप जस्टिफिकेशन के बाद जस्टिफिकेशन देते जाएं, बिकॉज यू आर हेडिंग एट द राइट रॉन्ग थिंग। बिकॉज इफ changing the opinion would mean changing the attitude, which in turn means changing their whole belief system and their feeling system, which means changing their whole identity. That is why learning is difficult, right? So हम क्या कर सकते हैं, एक है try to practice, जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, या not the attitudinal framework, intellectual framework। टाइम नहीं है तो अगली क्लास में मुझे बताना, बेसिक असम्पशन भी, फ्रेमिंग भी, इसमें हम इन डेप्थ बात करेंगे। इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क सिर्फ इतना होता है, विद चेंजिंग फैक्ट्स वी चेंज योर ओपिनियन ठीक, विद चेंजिंग ओके। आपकी फैक्ट्री में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ठीक, राबिया नई HR हायर हुई है और सर्जरी के लिए गया देखने के लिए, बार बार आपको कहती है सर मेरा ख्याल है ट्रेनिंग करवा दी है लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी में एक्सीडेंट्स।
आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये नालायक है, ये नेग्लिजेंट है, कोई ज़रूरत नहीं ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करने की, इनको ज़रा सख्ती से डांट पड़ाओ, एक दो को निकालो, खुद बहुत एक्सीडेंट खत्म होते हैं। ठीक, तो दिस इज एन एटीट्यूडनल एफओआर टू हर ओपिनियन टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, बेसिक एग्जाम्पशन में भी है। अगर आप कहें आपका इंटेलेक्चुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, आपने अच्छा है, डू यू थिंक सो, लेट्स ट्राई। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क? ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद भी एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे, खत्म हो रहे। सो आप पूछते हैं आपने यार लिसन व्हाट हैपेंड, सो आप कहती सर मैंने मैटर आई स्किप माय माइंड, आई थिंक लाइटिंग जो है हमारी बहुत डिम हो जाती है शाम के टाइम, और मैंने पैटर्न नोट किया कि ज़्यादा एक्सीडेंट शाम होते हैं और शिफ्ट वर्कर्स भी थके होते हैं, पुअर लाइट की। सो यू से ब्रिलियंट, लाइटिंग इंप्रूव करो। देखो शुरू में से में जाओ, मैंने कहा था यू वांट रिवेंज, यू वांट सॉल्यूशंस, यू वांट अ पास्ट ओरिएंटेशन और अ फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेड। सो इन्होंने नए फैक्ट्स दिए, पहले ट्रेनिंग, आपने कहा ट्रेनिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग डिडंट वर्क, शी गेव अ न्यू some new facts, you say okay, with new facts I'll change this and you'll get the solution. This is psychological flexibility या intellectual FOR। देखो मेरी बात सुनो, मैंने शायद आपको ये भी बताया था tyranny of shorts में कि have you ever how many genuinely happy people do you know? You remember I asked you, genuinely happy people in your life, how many have you seen? You can literally count them on fingers. 2 to 3. Okay. उनको तीन को अपने ज़हन में रखो। मैं कुछ बातें कहूँगा। Are they immensely successful professionally? Are they immensely wealthy? Not super rich. No, super rich. Okay, कोई yacht नहीं है उनके पास, कोई private jet नहीं है ना। ठीक, they are very famous. No. अब उन तीनों में are they rigid? Flexible है, bold Very good. Do they demand that the world should change according to their wishes, or do they change according to the changing circumstances? They have some wishes and willingness to do something that will structure their mindset, and वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए तो इससे ज़्यादा बेहतरी आ जाए। और अगर वो ना हो तो क्या वो बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो जाएंगे? They'll keep going on. They will keep going on. Yes, so they are flexible. They are intellectual. With changing new information, they change their opinion and their behavior. So ये तीन लोग अपने ज़हन में याद रखें, ठीक? उसके अलावा हम कर सकते हैं जो कि आप लेट्स से आर्मी में आप ऑल राउंड स्टाफ एंड कमांड कोर्स होता है, इंटरव्यू कर्नल लेवल तक आपको टैक्टिकल रखा जाता है, ठीक। उसके बाद उससे ऊपर आपको स्ट्रेटेजिक, द बिग पिक्चर, जिसको हम यहाँ इस तरह अप्लाई करेंगे कि आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा करें। एटीट्यूडनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नैरो ना हो, एटीट्यूड्स एज अ फ्रेम वी यूज ना, वो नैरो ना हो, उसको जितना फैला सकते हैं फैलाएं। स्ट्रेटजी आप जितने वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो आपको क्या लगेगा कि आदमी शायद अपनी पार्किंग के बाहर बैठा हुआ है, चिल मार रहा है, ठीक है। इसमें फ्रेम